Just 20 kilometers away from Vasai, hidden deep in the Sahyadris, stands Takmak Fort. Once a watchtower of the Marathas, it is said to have witnessed countless battles. But today it was about to witness another kind of battle, our battle with ourselves, as me and my friend Rishabh began our trek. Hey guys, me and Rishabh, we have come to finally इतने महीनों बाद we have come to तकमक फोर्ट. तो आज हम लोग वे स्टार्टिंग थ्रू अ विलेज और सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा है भाई. तो पता नहीं कितना आगे चल के जाना पड़ेगा कि हम लोग पहाड़ चढ़ पाए. सो फॉर नाउ वी आर वॉकिंग थ्रू दिस फॉरेस्ट एरिया. तो ये कोई गांव है, गांव के अंदर बाइक पार्क कर लिया एंड यहाँ से हम लोग चल के अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फोर्ट. So there seems like there is one path, but ये पता नहीं यही तकमक का है कि किसी का घर का है, क्या मालूम भाई. पहाड़ तो उस तरफ है. The path welcomed us with fresh air and endless green. At first, it felt simple until the mountain decided to remind us that every peak demands efforts. भाई उतना चप्पल वप्पल निकाल के हम फिर घूम के आ गए. Apparently the route is from this side and Rishabh knows the route magically. Rishabh is very good with routes, by the way. Let us see how it is on foot. Hey, this leads to that river only, I think, bro. Huh? Then it is this one, I think. Dad also went like this. Yeah, फिर घूम रहे भाई. भाई इसलिए एक बंदा चाहिए भाई. बैरन लैंड में फोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे क्या मालूम. 2 घंटा. इंटरनेट पे तो 10-15 मिनट का मॉडरेट ट्रैक लिखा था. भाई ट्रस्ट नहीं करने का इंटरनेट को, कुछ भी लिखते हैं भाई. 10-15 मिनट, 15 मिनट से हम इधर ही घूम रहे हैं भाई. ऋषभ क्या बोल रहा है भाई. अभी तो कुछ पहाड़ नहीं दिख रहा भाई, दूर दूर. What is this man? तकमक फोर्ट, महाराष्ट्र. हाँ हाँ. तो भाई हम वहाँ से क्रॉस किए थे. Now we have come here. तो लड़की ने घूम फिरा के खेत में ही भेज दिया भाई. आता. ओके एडवेंचर भाई चल रहा है भाई, खतरनाक. तो अभी हमने एक रिवर क्रॉसिंग को क्रॉस कर लिया एंड मी एंड ऋषभ आर ऑन द वे टुवर्ड्स तकमक फोर्ट. दूर दूर तक फोर्ट नहीं दिख रहा भाई, दूर दूर तक बस खेती दिख रहा है. तो क्या पता भाई किधर है फोर्ट, लेकिन जा रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है भाई. ओके गाइस, फाइनली एक प्रॉपर ट्रेल दिख रहा है. Two are there, this and that. So this might be lead to some house. Yeah, I thought so. Just check. Yeah, this is some houses from there. हाँ भाई. अच्छा फाइनली नहीं था. वो किसी का घर था भाई. तो ये है फाइनली खेत में ही है हम. और कल बारिश हुआ था, बहुत जोर का बारिश. Takmak is known for its tricky trails. Many trekkers have lost their way in these jungles. Even we found ourselves questioning the paths. गाइस घूम फिर के हम इधर ही आ गए. ऋषभ ने एक पूरा घुमा दिया और वापस इधर पहुंचा दिया. दिस इज द ग्रैंड एंट्रेंस टू तकमक फोर्ट. ओह ग्रेट. व्हाट इज दिस मैन. याबा भाई साहब, I did not anticipate this kind of कीचड़. Alright guys, पहुंच रहे. Reaching. This looks like a proper trail, bro. कितना टाइम है उधर से? But with guidance from locals who know these forts better than any map, we stayed on track. Alright guys,
अगर ये पसंद आया ना, then every weekend we'll come and do trek. Make target. अगली बार एक दिन 45 मिनट्स में ट्रैक चढ़ जाएंगे. Just joking guys, never possible. Guys, थोड़ा थोड़ा फोर्ट पास आने लग गया. अभी एक लोकल बंदा मिला था और ट्रैक का टाइम 2 घंटे से 4 घंटा बढ़ा दिया भाई. 4 घंटे का ट्रैक. बोलता है लोकल लोग का 2 घंटा है और नए फर्स्ट टाइमर का 4 घंटा. देखते हैं भाई, देखते हैं भाई. और वैसे भी ट्रैकिंग के मामले में तो मैं बहुत क्रेजी हूँ भाई. अगर 1 घंटे का ट्रैक रहेगा मेरे 3 घंटा लग जाता है. एंड सी द रोड्स, खतरनाक है भाई. भाई घर के इतना पास. हार्डली टुक अस हाफ एन आवर फ्रॉम होम टू रीच दिस प्लेस. एंड काफ़ी खूबसूरत है. देयर आर डीप होल्स, कहीं से भी टपक के निकल जाएगा. तो गाइस वो जो रिवर हमने क्रॉस किया था वही इसका कंटिन्यूएशन है भाई. तो यप, वी आर ऑन द वे, मेकिंग सम प्रोग्रेस. Walking through these river trails, listening to the nature's noise, this trek was just getting more and more fun. खतरनाक है भाई. गलत ट्रेल पे चले गए हम. I found some locals. And now we are going with them. So हम लोग रिवर साइड के ट्रेल में चले गए और ट्रेल्स का बहुत कंफ्यूजन है. सो यू नीड, आई वुड से यू नीड टू नो at least little bit or keep searching for locals every now and then so you end up on the right trail. So yeah, so far so good. जा रहे भाई. आगे अच्छा रहता है. नहीं रहे भाई. Oh, who would know, bro? That's why don't follow, no. So there's a path that goes from that side also, but we are with the locals. So we found the secret path. Who knew? Who knew? Who knew? There's a path from here. Okay. Okay. We'll have to boost up the pace a bit. Who knew, man? Clearly they have done it multiple times. Okay guys, we don't have water. Oh god. Oh god. No. Well, I think we'll stop for 2 minutes, take some rest, then we'll start. What say? Yes guys, We still didn't reach, bro. we still haven't reached, but we have taken our first stop. What do you say? How's the trek and trail? It was good, not bad. Good. Only just half an hour from the home, guys. Let's come next weekend. Alright guys, after 2 proper breaks and little water from the strangers we met on the way, we are back on the trail. Now there is a 15 to 20 minute climb, and it is a tough climb it seems. So let us
Okay, guys. Hi. I think the difficult part has not started yet. I ran out of breath sooner than expected. My legs slowed, my chest tightened, but one thought kept me moving. The fort is waiting. Crazy, but. Oh, guys. As हम लोग we are almost like 50% done with the trek, I think. Another 50%. Yeah, done with 70. 70%. And look at this. भाई चारों जगह हरियाली हरियाली भाई. So on the way एक सांप दिखा है. अभी mosquitoes bite कर रहे हैं. Harisha found one stick for me. I almost slipped. I slipped only. And हाथ सब कीचड़ कीचड़ हो गया भाई. कैमरा भी कीचड़ हो गया. बस ऋषभ जिंदा है भाई. ऋषभ क्या बोल रहा है भाई? ऋषभ को स्टिक नहीं मिल रहा उसके हाइट का. Stick is needed, bro. Otherwise, it's very hard. Yeah, bro, the stick is helping a lot, bro. Yeah. I can just push against it. Yeah. The higher we climbed, the tougher it got. Rocks grew steeper, my breaths grew shorter, but the fort tests you before it rewards you. I found this beautiful one of a kind white color crab in the middle of the forest. What else do we need to witness on this trail? Let the journey continue. Guys, I guess it's gone. why you can see light from there. Guys, कई वहाँ नीचे से आए थे and now we are still having another climb and At one point, my legs almost gave up. The rocks seemed endless, and I could feel my body getting heavier with every step. That's when Rishabh spotted a fallen stick on the trail. He handed it to me. guys, हम finally करीब 2-3 घंटा रुक के चल के we have reached to one point. वहाँ से ऊपर से टॉप है एंड यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है गाइस. तो ऊपर से क्या ही नज़ारा होगा. Let us go to the top and we shall find out. And I realized something simple yet profound, the importance of a stick. Every time I leaned on it, it was as if my whole body found balance again. Hare Shambhu, Shambhu, Shiva Mahadeva, Shambhu. Chumma. Next level. कर्पूर गौरम करुणा संसारस. Oh ho ho! All right, guys, we have made it. Woo! Let's go. Oh no! Absolutely worth it. I think this is it, bro. Bro, look at the peak in front, bro. Imagine going for that. Guys! Imagine going for that one. And that's the beauty of treks. They break you, only to build you stronger. करने भाई. शिवाजी ने इतना. हाँ, शिव ने नहीं, शिवाजी ने. Okay. Alright, guys. So, we have made it to a certain point in the trek from where the view is very beautiful. Looks pretty amazing. So, भाई ऋषभ भी आ चुका है. ऋषभ, what do you have to say about this place? Oh, crazy. Just 20 kilometers away from my home. Just 20 kilometers away from Vasai, guys. Just 20. And walking another 5. वॉकिंग के लिए भाई अगर बिगिनर हो 4 घंटा, अगर मीडियम आपने किया हुआ है ट्रैक वैक तो 3 घंटा, और अगर आप प्रो ट्रैकर हो तो 2 घंटा.
और अगर आप उससे भी प्रो हो तो 1 घंटे का है वो अपने को चार अगर जंगली हो तो 1 घंटे में हो जाएगा। और अगर हम हो तो फिर 5 घंटा हुए। यू नो वी टुक 4 hours I think. No, it's just 3 hours. Then there must be another hour of trek, bro. oh, it's done. That's the peak. No, there's something. No, that's This is not it. There is more. Yeah, I've seen it in the video. एट दिस पॉइंट हमको भी नहीं पता था भाई कि आगे जाके एक और ट्रैक है जो तकमक फोर्ट है। हम लोग बस एक सर्टेन पॉइंट पे थे, इसके बाद आगे जाके तकमक फोर्ट का चढ़ाई था जो हमने इस बार तो किया नहीं, बट आगे दिखाता हूँ आपको वीडियो में। ये तो बस एक छोटा सा रिवॉर्ड था फॉर द हार्ड वर्क दैट यू हैड डन फ्रॉम द पास्ट 3 hours. When I said it was 4 hours, I wasn't joking. Guys, वो है आम जिंदगी। और ये है मेंटोस जिंदगी। At last the fort stood before We us. have made it to Takmak Fort का 1 point because असली फोर्ट तो उधर है भाई। गाइस असली फोर्ट तो उधर है सामने और हम लोग है उसके पीछे। सो एक थंबनेल शॉट ले लेते हैं यहाँ से। Just as we reached, the skies opened up. It began to rain. The final peak disappeared into a blanket of fog. It felt like we had reached the fort, and more like the fort had chosen to reveal itself to us. Alright guys, it has started raining. First, guys, it's raining. Wait. बड़े मुश्किल से we reached and now it started raining. So it is there are people on the top over there on that, and there are a lot of people here also. So it's all crowded, but not too much crowd, peaceful crowd. And it started raining very badly, so now the view is getting covered. Hey, that. All right guys, the trek to the bottom has started. We haven't completed it. अभी बाकी था थोड़ा बहुत, मे बी नेक्स्ट टाइम, बट आज के लिए बस इतना ही भाई. So when people say easy to moderate, you understand it's difficult, and when people say it is difficult, understand you are not meant for it. All right. It felt less like we had reached the fort and more like the fort had chosen to reveal itself to us. At the top we weren't alone. We met fellow trekkers who had climbed alongside us. Among them was one man with an inspiring story. This was his 88th trek in Maharashtra. Hearing that reminded us that every summit is just a step in a much bigger journey. Climbing down was easier, but not with its own gifts. On the trail back, we found a stream, cool water flowing through the rocks. We dipped our tired feet, let the current wash away the exhaustion, and laughed with our new friends. The mountain had tested us, but it also rewarded us. Takmak Fort isn't just about history or views, it's about perseverance. It's about perseverance, about trusting strangers who become companions, and about finding strength in moments when you feel like giving up. I ran out of breath, we nearly lost the trail, but we kept moving. And in the end, the mountain gave us more than we asked for. This was our story of Takmak, our reminder that every tough climb ends with view worth remembering. Alright guys, that is it. After this we'll be leaving. पीना पड़ेगा ना. Alright guys, तो मज़ा मस्ती करके पूरा ट्रैक वैक कंप्लीट करके भाई हम लोग फाइनली एग्जिट कर चुके हैं. सो थोड़ा बीच में वहाँ पे पानी में रुके थे, थोड़ा मज़े कर रहे थे, और अभी हम लोग फाइनली एक दुकान पे आए थे. तो सुबह ना पानी पिया था ना नाश्ता किया था, कुछ नहीं. तो भाई अभी यहाँ पे आके पानी पिया. ऋषभ पीछे कुछ ठूस रहा है भाई. कहाँ पे ऋषभ?
देखो भाई अंधेरे से बाहर निकल के आ गया. तो yes guys, that is it for this video. Thank you for watching this video and and please do like and share and subscribe to this channel. You will keep getting entertaining vlogs like this. Till then, see you in the next one.